हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे राइट्स 2026 की जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, उसके लिए कंप्यूटर नॉलेज का आज हमें यहाँ पे टॉपिक 18 एमएस एक्सेल बेसिक कुछ फॉर्मूला एंड फंक्शन के कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है। और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए, कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें सभी टॉपिक शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज दिए हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एग्जाम के लिए। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एमएस एक्सेल के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है विच सिंबल इज यूज टू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एट द रेट, हैश, इक्वल, डॉलर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड इक्वल। ऑल एक्सेल फॉर्मूला बिगिंस विथ इक्वल सिंबल। नेक्स्ट सेकेंड, द फंक्शन इक्वल्स टू सम a1 टू a5 विल। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मल्टीप्लाई वैल्यू, सेकंड ऐड वैल्यू फ्रॉम a1 टू a5, थर्ड काउंट वैल्यू एंड फोर्थ एवरेज वैल्यू। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऐड वैल्यू फ्रॉम a1 टू a5 बिकॉज सम ऐड ऑल न्यूमेरिक वैल्यू इन द रेंज। नेक्स्ट थर्ड, which function is used for conditional logic। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सम, if, VLOOKUP, count। तो करेक्ट आंसर है सेकंड if evaluate a condition and return different result। नेक्स्ट फोर्थ, what is the correct syntax of if function। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट if condition true false, second if value condition result, then if condition value if true and value if false, and fourth if true false। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड if condition then value if true otherwise value if false। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ, वी लुकअप इज यूज टू। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ऐड नंबर, सेकंड सर्च वर्टिकली इन अ टेबल, थर्ड फॉर्मेट सेल एंड फोर्थ काउंट डेटा। तो करेक्ट आंसर है सेकंड सर्च वर्टिकली इन अ टेबल बिकॉज वी लुकअप सर्च द फर्स्ट कॉलम एंड रिटर्न मैचिंग वैल्यू। नेक्स्ट सिक्स, इन वी लुकअप द कॉलम इंडेक्स नंबर रेफर्स टू। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रो नंबर, सेकंड कॉलम नंबर इन अ टेबल एरे, थर्ड शीट नंबर एंड फोर्थ सेल पोजीशन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड कॉलम नंबर इन टेबल एरे बिकॉज इट स्पेसिफाइज विच कॉलम वैल्यू टू रिटर्न। नेक्स्ट सेवंथ, व्हाट हैपेंस इफ फॉल्स इज यूज्ड इन वी लुकअप। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट अप्रोक्सीमेट मैच, सेकंड एग्जैक्ट मैच, थर्ड नो मैच एंड फोर्थ एरर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड एग्जैक्ट मैच बिकॉज फॉल्स इंश्योर एग्जैक्ट मैचिंग। नेक्स्ट एट, which formula return pass if marks greater than 40 else fail। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इक्वल टू if a1 greater than 40 then pass or fail, second if a1 less than 40 pass and fail, then if a1 equals to 40 pass fail, and if a1 greater than equals to 40 fail pass। तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट if a1 greater than 40 मतलब 40 से अगर बड़ा है तो पास अदरवाइज फेल। ओके। नेक्स्ट नाइन्थ, which error value when VLOOKUP cannot find a value। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट हैश वैल्यू, देन हैश रेफ, हैश NA एंड हैश डिवीजन जीरो। तो करेक्ट आंसर आएगा हैश नॉट अप्लीकेबल, इट इंडिकेट वैल्यू नॉट फाउंड। नेक्स्ट, वैसे देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें 25 चैप्टर प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस दिए हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एग्जाम के लिए। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट 10, सम फंक्शन इग्नोर। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर्स, टेक्स्ट वैल्यू, सेल रेफरेंस, रेंज। तो करेक्ट आंसर है सेकंड टेक्स्ट वैल्यू बिकॉज टेक्स्ट इज इग्नोर्ड अनलेस कन्वर्टेड टू नंबर। नेक्स्ट 11, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट A1, $A1 $1, $A1 एंड $A1। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड $A $1 बिकॉज इट लॉग बोथ रो एंड कॉलम। नेक्स्ट 12th, which function can replace nested if for multiple condition। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सम, VLOOKUP, count एंड मैक्स। तो करेक्ट आंसर है सेकंड VLOOKUP। ओके, VLOOKUP simplifies multiple condition check using table। नेक्स्ट 13, if VLOOKUP range is not fixed what issue may occur। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फास्टर कैलकुलेशन, इनकरेक्ट रिजल्ट, नो आउटपुट, सिस्टम क्रैश। तो करेक्ट आंसर है सेकंड इनकरेक्ट रिजल्ट बिकॉज रिलेटिव रेफरेंस में शिफ्ट ड्यूरिंग कॉपिंग।
Next 14. Which formula add non-contiguous cell A1, A3, A5? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इक्वल टू सम A1 to A5, सेकंड इक्वल्स टू सम A1, A3, A5, देन ऐड A1, 3, A5 एंड टोटल। तो करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड सम इक्वल टू सम A1, A3, A5 बिकॉज कॉमा सेपरेट इंडिविजुअल सेल। Next 15. Which argument in if function is optional? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंडीशन, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स एंड नन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड वैल्यू इफ फॉल्स बिकॉज इफ ओमिटेड एक्सेल रिटर्न फॉल्स बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट 16. वी लुकअप सर्च इन विच डायरेक्शन? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, रैंडम। तो करेक्ट आंसर है सेकंड वर्टिकल बिकॉज इट सर्च डाउन द फर्स्ट कॉलम। Next 17. Which formula will give an error? The option first equal to sum A1 to A5. Second, if A1 greater than 10, then yes and no. Then third, we look up A1, B1 to B5, true and false and equal to sum A1 to A5. तो correct answer आएगा fourth because missing closing parenthesis cause error. Okay. Next 18. Which function return the largest value? तो देखो ऑप्शन फर्स्ट sum, max, if, count। तो करेक्ट आंसर है सेकंड max, max find the largest number। नेक्स्ट 19. nested if means तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मल्टीपल सम फंक्शन, सेकंड if inside another if, थर्ड वी लुकअप इनसाइड सम एंड फोर्थ फॉर्मूला इनसाइड टेक्स्ट। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड if inside another if because used for multiple condition evaluation। Next 20. Which limitation is associated with VLOOKUP? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट वर्क हॉरिजेंटली ओनली, सेकंड कैन नॉट लुक टू द लेफ्ट, थर्ड कैन नॉट यूज नंबर एंड फोर्थ कैन नॉट हैंडल टेक्स्ट। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड कैन नॉट लुक टू द लेफ्ट बिकॉज VLOOKUP कैन ओनली सर्च राइट वर्ड। ओके, वैसे देखिए कंप्यूटर नॉलेज, जीके बैंकिंग, अकाउंट फाइनेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।